earlier today, RJD leader Tejashwi Yadav said that Jeevika didis, women associated with the state's rural livelihood mission, will be granted government employee status and also a monthly salary of rupees 30,000. Tejashwi Yadav said that the extent of exploitation faced by Jeevika didis cannot even be described, and that the decision was taken after reviewing their working conditions. While former Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav made several election announcements at a press conference which took place earlier today, he promised, like I mentioned, a salary of rupees 30,000 and government employee status for Jeevika didis. And apart from that, the return of the rupees 10,000 given to women. He also accused the current government of corruption. Take a listen. जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ करने का काम करेंगे। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई, तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है और ये कोई चुनावी प्रक्रिया में होने वाला नी जर्क रिएक्शन नहीं है तेजस्वी जी, जो आप खिसियाहट, बौखलाहट में, जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं खप्तुल हवास होकर बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी जी, बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है, क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है, ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। All right, let's also now tell you about the uptick in women turnout when it comes to the elections in Bihar, and these are in percentage. Number 1, in 2005 rather. So in 2005, the male turnout stood at, as you can see, 49.9%, while women were at 42.5%. Then in October 2005, female turnout, voter turnout stood at 44.5% and male at 47%. Clearly not much of a difference. Moving on, in the year 2010, female, we saw a massive increase, a jump in female voter turnout from 44.5%
46.5% in 2005 to now in 2010, 54.5%. Meanwhile, male voter turnout also increased, but it was rather below the female voter turnout at 51.1%. Then in 2015, the female voter turnout increased by almost 3%. That's at 53.3%. Pardon me, at 60.5%. So almost a 5% jump there. The pink line, 60.5% female voter turnout and the male voter turnout at 53.3%. The last elections, which happened in 2020, the female voter turnout almost touching 60%, 59.7%, while the male voter turnout 54.5%. So clearly, these numbers, these stats show us that Bihar has seen a surge in women voters, female turnout surpassing male participation in recent elections. We'll wait and have to see how that turns out this year. All right, let's also now tell you about the Bihar SOPs for women. Now, what are both the alliances, the NDA and the Mahagathbandhan, saying? What are the major announcements when it comes to women of Bihar? When it comes to the NDA alliance, they've clearly said direct transfer of rupees 10,000 per month. While talking about the Mahagathbandhan, they've said government job and rupees 30,000 monthly. This announcement, like I mentioned, was just made earlier today. Moving on to the other SOPs, NDA says financial support of up to rupees 2 lakh. Meanwhile, Mahagathbandhan says rupees 30,000 year under, and this is under the Mahabeti Yojana of the Mahagathbandhan alliance. Now, NDA also says rupees 105 crore loans. Meanwhile, Mahagathbandhan says rupees 2,000 allowance in government jobs. And lastly, entrepreneurship support. That's what the NDA alliance has said towards women voters of Bihar. While the Mahagathbandhan says interest-free loans for all entrepreneurs in Bihar. So this is perhaps just a lowdown of Bihar SOPs for women as we are just 15 days away from the elections there in Bihar.